Okay, students. So in today's class, we will be discussing some more questions from locomotion and the movement. Okay. So hope you remember the basic things we studied in the very previous class. Okay. Keeping that in mind, let's try to answer some more questions. Just go through this question. Falguni, read the first statement. Farcical. We have to select the correct statement among these four. Okay. So just now Falguni has read the first statement. Muscle bundles are held together by collagenous connective tissue layer called a fascicle. So is this correct one? The covering of muscle fiber, is it called a fascicle? Sure. It is called what then? It's wrong. It's a wrong statement. Yes. It is called the epimysium. Okay. So their mysium is the word used for the covering. Fascicle is group of muscle fiber. Fascicle is a group of muscle fiber simply. So the covering is epimysium. So this statement is wrong. Okay. B. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium ions. Ananya. Incorrect. Correct. True. Yes, this is correct because it's like a bag. It's a storehouse which contain calcium. When a action potential generates, what happens? Calcium will come out of the sarcoplasmic reticulum. It spreads throughout the sarcomere. Go and sit upon troponin, tropomyosin नहीं, troponin, so that tropomyosin का भी conformation बदल जाएगी. Okay. Now, so this one is true. B is true. Now C, striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein. Striated appearance of skeletal muscles are striated. Yes, आधा तो सही है. It is due to the distribution of actin and myosin protein. Actin is I band, myosin is A band. I band light है, A band dark है. So indirectly it is saying that striated ही रहता है skeletal muscle. I और A band की वजह से. That means actin और myosin की वजह से. Which means that this sentence is true. Little bit complicated है. Still देखो NEET 2023. But logically it is correct. पहली बार हमने इसे पढ़ा तो हमें ऐसा सही नहीं लगेगा. You will be feeling like alternate light and dark band की वजह से होता है striation. But light means क्या है? Actin. Dark means क्या है? Myosin. वो knowledge है तो easily ये आंसर कर सकते हैं. Anyway, B and C are true, which means हम हमारा आंसर में पहुंच गए. B, C, A तो गलत है, तो ये D ऑप्शन नहीं हो सकता है. Only the first one. B and C only. Let's read the last one. You make correction. Make it correct. M line is considered as the functional unit of contraction called the sarcomere. M line और sarcomere के relation क्या है? M line, where is M line found? Sarcomere की middle में. So M line is not the functional unit. Sarcomere to Z line के बीच में जो जगह है, that is the what? Functional unit. So अगर ये word पहले आया, sarcomere word पहले आया M line की जगह पे, then the sentence will be correct. Sarcomere is considered as the functional unit of muscle, not M line. So B and C are the correct statement. Let's check the answer. A. Option A means B and C. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is the storehouse of calcium ions. Striated muscle fiber is appearing because of actin and myosin. That are correct. Okay. अभी देखिए the next question. A vertebra has a convexity of both in front and behind it. It is called what? Vertebra है ना, एक दूसरे से interlock कर रहा है. तो vertebra can appear in different pattern. Like दोनों जगह convex हो सकता है, दोनों जगह concave हो सकता है, एक जगह concave एक जगह convex हो सकता है, दोनों जगह flat भी हो सकता है. मतलब concave concave, convex convex, concave convex, flat flat, ऐसे एक दूसरे से अटैच कर सकते हैं. तो यहाँ पे पूछा है कि both convex है तो उसको क्या नाम दे. So this one you have to note down. So let's directly go to the answer. Actually ये options में इसका सही आंसर नहीं है. ऑप्शन में इसका सही आंसर नहीं है. बट मोस्ट रिलेटेड आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में. मोस्ट रिलेटेड आंसर.
Let's check what is the most related answer. It is acelus. Acelus मतलब without cavity. Cavity नहीं है, मतलब convexity हो सकता है. So you just write like this. I will copy it. See. If it is said that both the end convex, दोनों एंड कॉन्वेक्स है, तो उसको बोलता है आम्फीडाइकोंडाइल. आम्फीडाइकोंडाइल. बोथ द एंड्स आर कॉन्वेक्स हियर. अगर बोथ द एंड फ्लैट है तो then it is called as amphiplation. Amphiplation. So the word amphi का मतलब क्या है? both. amphibian, both land and water. इसी तरह तो amphi का मतलब both side. both side convex है तो amphidicondyl होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में देखिए तुम लोग amphidicondyl वर्ड ही नहीं है. amphidicondyl वर्ड नहीं है. amphiplation मतलब both the side flat है. and what is amphicoelous? दोनों साइड कॉनकेव है तो amphicoelous बोल सकते हैं. देखो both the side concave, both concave, amphicoelous. नाउ हमको डायरेक्टली समझा कि जो क्वेश्चन पूछा है वो बोथ द साइड कॉन्वेक्स का है. ऑप्शन में amphidicondyl है तो इट वाज द करेक्ट आंसर, लेकिन ऑप्शन में amphidicondyl नहीं है. बट फिर भी रिलेटेबल आंसर acelus है. acelus. acelus मतलब क्या है? amphicoelous मतलब क्या है? दोनों जगह पे कैविटी है. acelus मतलब कैविटी ही नहीं है. कैविटी नहीं है तो फिर कॉन्वेक्सिटी हो सकता है. सो acelus मतलब नो कैविटी. So this is indirectly mean, this indirectly mean indirectly means what? Convexity. ये बहुत पुराने सवाल है, फिर भी अगर हो पूछा तो हमें ऐसे याद करके आंसर करना पड़ेगा. बोथ कॉन्वेक्स का नाम क्या है? अनन्या. बोथ कॉन्वेक्स, amphidicondyl. बोथ कॉनकेव है तो फाल्गुनी, amphicoelous. दोनों जगह फ्लैट है तो amphiplation. अगर कैविटी ही नहीं है तो acelus. ओके, यस, दैट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन. नोट डाउन किया 4 वर्ड्स विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिब्रा. एक इसके ऊपर बोल रहा है, वर्टिब्रा की शेप के अनुसार बोल रहा है, वर्टिब्रे. हाँ, दोनों जगह कैविटी है तो फिर अटैच होना मुश्किल है. ह्यूमन बींग्स में कैसा है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स होना चाहिए. एंड अगर अटैच नहीं हो रहा है तो देन देयर विल बी कार्टिलेजेस इन बिटवीन द वर्टिब्रे. देयर आर कार्टिलेजेस. वी लर्नड इट, राइट? व्हिच टाइप ऑफ कार्टिलेज वाज दैट? फाइब्रस स्कल के बीच में आते हैं, है ना? देन वन मोर वाज देयर. कैन यू रिकलेक्ट? नहीं नहीं नहीं, we just referred it. Let's just a second. इसके पहले की एक क्वेश्चन में हमने वो डिस्कस किया था. देखो, cartilaginous joint. Cartilaginous joints are the joints present in between the vertebrae. तो उस cartilaginous की वजह से कनेक्ट कर सकते, कार्टिलेज की वजह से. तो कार्टिलेज बीच में आके उसको कनेक्ट करता है. समझो? यस. सो कार्टिलेज एक्ट लाइक ए ग्लू टू join to vertebrae. Now coming to next question. How many ribs are present in human beings? Of course, 12 pairs of ribs are present. So the answer is 12. This one is correct. 12 pairs, right? 12 pairs of ribs are present, out of which 7 are called true, 8 are 8th, 9th, 10th false रहता है, and 11th, 12th floating रहता है. Acromion process is characteristically found in rabbit or mammals.
वो कहाँ पे फाउंड है? ओल्ड क्वेश्चन है। अक्रोमियन प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे टच करके देख लो, जस्ट टच ऑन दीज टू शोल्डर्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हमारा स्कैपुला है ना, स्कैपुला मतलब द ट्रायंगुलर बोन, स्कैपुला की एक साइड शोल्डर की सबसे हाईएस्ट पॉइंट में प्रोजेक्ट कर रहा है। देयर इज अ बोन हियर विच मार्क्स द हाईएस्ट पॉइंट इन द शोल्डर। सो दिस प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन स्कैपुला की प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन का नाम है अक्रोमियन प्रोसेस। So the projection which marks the highest point in shoulder that arising from scapula is known as acromion process. समझा? स्कैपुला की प्रोजेक्शन। सो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म की किधर प्रेजेंट है? रैबिट और मामल्स की, हम मामल्स है, रैबिट भी मामल है। सो कहाँ पे प्रेजेंट है? ये गिर्डिल कौन सा गिर्डिल रहेगा? पेक्टोरल गिर्डिल। तो आंसर आया होगा ना, द आंसर इज पेक्टोरल गिर्डिल, बी। देखो, found in the pectoral girdle of mammals and rabbits. So you can note down acromion process. Acromion process is found in pectoral girdle. Moving to the next question, match the following. यहाँ पे हम अपने आप करो, दोनों अपने आप करो, एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, नोटबुक में लिख के दिखाओ, मुझे डिस्कस नहीं करना है, इंडिविजुअली करना है। मिला? क्या आंसर है फाल्गुनी इसका? What about you, Ananya? D. Okay, D. Just by knowing fibrous joints are skull, present in skull, it doesn't allow any kind of movement. With this only this information is enough for us to get the answer, because A3 कहीं और पे नहीं है. So this is the safest zone. तो एक match करके देखा तो हमें मिला. And for surety, just let's look at the second option. Cartilaginous joints, they are having they are present in the vertebrae. अभी देखे बताया ना, cartilaginous joints are in the vertebrae. Limited movement है. Then what about fourth one? knee में जो joint है, that is hinge joint. Okay, hinge joint which we can rotate only in one plane like a door. Okay, right. Then ball and socket joint, that is present in the humerus and the pectoral girdle. यहाँ पे जो joint है, that is ball and socket joint. Yes. So cartilaginous joints are present in the vertebrae, hinge joints are present in the knee, ball and socket joint are present in the humerus and pectoral girdle. Okay, so ये आंसर सही होगा. Yes, that's it. D is the correct option. Now, three types of muscles are given, A, B, C. Identify the correct matching pair along with their location. ये जो muscle है, can you identify this muscle name? ये तीनों, अनन्या, अनन्या will say three, तीनों का नाम बताओ. B is smooth. Okay. C. Are you sure? Skeletal branched नहीं है, skeletal unbranched है. Cylindrical होके भी unbranched है and multinucleated है. Striation से है ना, दिख रहा है ना, dark, light, dark, light.
इसमें भी है स्ट्राइएशन है, कार्डियक में भी स्ट्राइएशन है, इसमें भी स्ट्राइएशन है। इसका स्ट्राइएशन शायद वहां से विजिबल नहीं होगा, ये पास में से मुझे दिख रहा है। देयर आर लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, बहुत सारे स्ट्राइएशन है। सो दिस इज एक्चुअली द अनब्रांच्ड striated muscle. Okay, so A denote striated muscle and this denote what? Cardiac muscle. तो ऐसे जॉइनिंग पोर्शन देखना, ब्रांचेस आ रहे तो देन इट इज श्योर कार्डियक होता है। नाउ यू कैन रीच द आंसर वेरी क्विकली। ए डिनोट स्केलेटल, बी बोल रहे हैं स्केलेटल मसल की एग्जांपल ट्राइसेप्स, यहाँ पे जो यहाँ पे बाइसेप्स यहाँ पे ट्राइसेप्स, सो ट्राइसेप्स मसल्स रहेगा। यस। बी स्मूथ मसल प्रेजेंट इन स्टमक, दैट्स करेक्ट। कार्डियक मसल प्रेजेंट इन हार्ट। सो हम तीनों को यही लग रहा है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यस यस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। B is the correct answer. Bones fragile in gout, osteoporosis, arthritis, none of this. 3 डिसीज का नाम। किसमें बोन्स हल्का होके टूट जाते हैं? तुम गलत है। शी इज करेक्ट, अनन्या इज करेक्ट, ओस्टियोपोरोसिस इज द करेक्ट वन। यहाँ पे देखो, आर्थराइटिस में क्या होता है कि साइनोवियल जॉइंट्स के बीच में जो कैविटी रहता है, वो कैविटी में जो मेम्ब्रेन है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन इज नॉट मेकिंग द साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड नहीं बन रहा है, इसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। दैट फ्रिक्शन क्रिएट जॉइंट पेन। जॉइंट पेन की नाम है आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, एंड इट कॉजेस इन्फ्लेमेशन। फ्रिक्शन की वजह से वहां पे इन्फ्लेम होता है। इटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, कहीं पे भी ये इटिस वर्ड सुना तो इन्फ्लेमेशन है। तो इससे बॉन्ड फ्रजाइल नहीं होता है, दिस ओनली हैपेंस इन बिटवीन द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के अंदर नहीं होता है। बॉन्ड्स के अंदर की डिसीज कौन सा है इस पे? ओस्टियोपोरोसिस है। गाउट भी जॉइंट्स में होता है। गाउट इज लाइक यूरिक एसिड की अक्यूमुलेशन इन बिटवीन द जॉइंट्स, वो भी जॉइंट पे नहीं होता। तो बोन्स को अफेक्टिंग, बोन्स की डिसऑर्डर ये ऑस्टियोपोरोसिस। ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन्स में कैल्शियम कम हो जाएगा, पोर्स डेवलप होगा, बोन्स विल बिकम इजीली फ्रजाइल। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ऑस्टियोपोरोसिस इज द आंसर। देन which one of the following is the skull bone? अगर आंसर नहीं आ रहा है तो जस्ट एलिमिनेट सम ऑप्शन। Atlas, do you think that it's a skull bone? Atlas is known as the first vertebrae out of the 26 vertebrae है ना, पहला vertebrae का नाम है Atlas. So this is not the answer. Then coracoid process and the arytenoid process. Arytenoid process is present in the larynx actually. So this one is also not the answer. Then coracoid process, have you heard about coracoid process? Let me check. It is present in the scapula. जैसे मैं अक्रोमियन प्रोसेस के बारे में बोला ना, इसी तरह स्कैप्यूला में एक प्रोसेस रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, उसका नाम है कोराकोइड प्रोसेस. सो दिस इज प्रेजेंट इन स्कैप्यूला, दिस इज प्रेजेंट इन द लारिंग्स रीजन, एटलस इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रे. मतलब आंसर क्या हो सकता है? टेरिगोइड. टेरिगोइड इज द स्कल बोन, स्कल बोन. बाकी सब दूसरे जगह का बोन्स रहता है. So coracoid process is present in the scapular region. Arytenoid process is present in the larynx region. Atlas is the vertebrae, first vertebrae. Pterygoid is the skull bone. Fine. Answer क्या रहेगा? Pterygoid. Pterygoid is the skull bone. Yes. Now, how many bones are present in human skull? Skull का पूरा पूछ रहा है. एक बार रिवाइज करके देखो ना. क्रेनियम प्लस ईयर ऑसिकल्स प्लस
फेशियल बोन्स इज इक्वल टू स्कल, ये सब मिला के स्कल बोन्स होता है। तो क्रेनियम, क्रेनियम में 8 बोन्स आएगा ना, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्यूपिटल सब काउंट करके 8 आते हैं। फेशियल 14 है। ईयर ओसिकल में एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो ऐसे 6 हो जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए? 28। लेट्स चेक द आंसर। हाँ, 28 bones आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्कल। ठीक है। Which of the following is a sesamoid bone? Sesamoid bone मतलब तुम लोग ये बिगर टो जो होता है ना, फर्स्ट टो हमारा फिंगर फीट का, तो वहां पे एक प्रोजेक्शन देख सकते हैं ऑलमोस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द थंब, और यू कैन सी ऐसे नकल्स जैसा प्रोजेक्शन देख सकते हैं, नकल्स जैसा। ओके, नी कैप, इट्स अ प्रोजेक्शन, नी कैप। हाँ, तो ये नी कैप जैसा टेंडेंस में, टेंडेंस मतलब क्या है? बोन और मसल के बीच में फिक्स किया हुआ राउंड, और वी कैन से ऑलमोस्ट ओवल प्रोजेक्शंस को बोलता है sesamoid bone. So it is ovally projected, oval projected, swelling जैसा दिखता है बाहर से, swollen जैसा दिखता है, and it is fixed on the tendon. ऐसे फिक्स किया हुआ राउंड और ओवल शेप्ड स्वेलिंग जैसे दिखने वाला बोन्स को बोलता है सिस्मोइड बोन। तो इसमें से कौन सा है वैसा एक बोन? पेल्विक, पेल्विक मतलब पूरा हिप आ जाएगा, पूरा हिप इज नॉट ए स्वेलिंग। Patella, patella is the kneecap. So this is the correct answer, right? This is the kneecap. So kneecap sesamoid bone है। Pterygoid bone is present in the skull. Skull में कुछ projection नहीं है। Pectoral girdle, उसमें पूरा girdles में projection नहीं है। Okay, so here we can say only sesamoid bone in the category is patella. एक बार note करके रखो, patella is a sesamoid bone. Okay. Then another question. Cranium of human being is made up of how many bones? अभी तो बोला 8 bones cranium में, 14 bone facial में, so answer is 8. देखो जल्दी जल्दी आंसर बोल रहे, which means that we have studied it. In a human body, which one of the following is anatomically correct? ये इसके लिए बाकी चैप्टर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम की चैप्टर है, उसमें है क्रेनियल नर्व्स, चैप्टर का नहीं है नर्व्स। तो नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स सिर से, ब्रेन से निकलने वाला नर्व्स है क्रेनियल नर्व्स, वो कितना पेयर्स है? स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स एंड द क्रेनियल नर्व्स 12। ये गलत है। ठीक है, एक ऑप्शन तो गया। फ्लोटिंग रिब्स, आंसर पे आ गया हमने, 2 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स। देन कॉलर बोन 3 पेयर्स, वो बिल्कुल नहीं, 3 कॉलर तो किसी को नहीं है, 2 कॉलर ही रहता है। सो दिस 2 कॉलर बोन मतलब स्कैपुला नहीं, क्लाविकल पूछ रहा है, क्लाविकल, क्लाविकल इज ओनली 2। सलाइवरी ग्लैंड कितना है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड? 1 नहीं है तो फिर कितना है? 2 भी नहीं, 2 से ज्यादा है। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। यहाँ पे चीक रीजन में पैरोटिड ग्लैंड इज देयर, टंग के नीचे सबलिंगुअल सलिवरी ग्लैंड इज देयर, लोअर जॉ में सबमैंडिबुलर सलिवरी ग्लैंड इज देयर। मतलब पैरोटिड, सबलिंगुअल,
submandibular. These are the salivary glands ki naam. 3 pairs are there. So the only answer is floating rib 2 pair का होता है. Note down करो. Now, देखो salivary gland 3 pair, cranial nerve 12 pair, polar bone 2 pair, floating rib 2 pair. Answer was floating ribs. देखिए अभी in mammals the teeth are, this is actually not from this chapter directly, but bones, teeth ये सब कुछ related है तो इसलिए इसमें डाला है. Anyway ये digestive system वाला chapter का है. So how many pairs of, see how many teeth we have? We have 32 teeth. Okay. Out of the 32 teeth, उसकी characteristics पूछ रहे हैं. In mammals, the teeth are of different types. Is it true? True. It is embedded in the cup-like socket in the jaw bones. Yes, jaw bones में gum आते हैं. Gum में जो cup-like process है, उसमें embedded है वो. Only two sets are present throughout life. Two sets मतलब एक रहेगा टेम्पररी टीथ जो मिल्क टीथ बोलते हैं, जो 7 to 8 years की पहली जो टीथ दिखता है दैट इज टेम्पररी टीथ, वो निकल जाए तो भी वापस आते हैं. एंड द अनदर वन, once if you lost some temporary teeth it is replaced by permanent teeth. वो अगर एक बार निकल गया तो फिर वापस नहीं आए. So that permanent teeth is one set and temporary teeth is another set. So 2 sets रहता है. That's also true. Which means they are not asking whether it is true. This is in part of the question only. What is the question? The conditions are referred as what? मतलब A को क्या बोलते हैं, B को क्या बोलते हैं, C को क्या बोलते हैं? Technical term पूछ रहे हैं. ठीक है. Can you guess? Heterodont, thecogodont, diphyodont. बराबर है. देखो अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो जस्ट ऐसे सोचो, 2 सेट्स, 2 को क्या बोलता है, डाई. तो डिफायोडोंट लास्ट में आया हुआ ऑप्शंस में डाउट आना चाहिए. उसमें 2 ऑप्शंस है एंड वन इज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर. मेनी को क्या बोलते हैं, हेट्रो बोलते हैं. तो बेसिक साइंटिफिक टर्म्स को हम ऐसे गसवर्क किया तो भी आंसर मिलेगा. हेट्रोडोंट इज द वर्ड यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. थीकोडोंट इज द वर्ड यूज्ड फॉर the embedded teeth in the jaw, and diphyodont does 2 different set of teeth found in the human beings. So this is the answer, A. Yes, A. Select the correct matching of the type of the joint with the example in human skeletal system. So you understood that there are many questions in the NEET starting from 2014. वही टाइम से ही हर साल जॉइंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही है. So if you study this kind of question, you will get at least 4 marks definitely. 4 marks is so important, right? Yes. बोलो. Hinge joint. आंसर मिला तो बताना मुझे. इसमें एक ही सही है. I think we have discussed this question earlier also. क्या बोल रहे हो? B. अनन्या, what's your answer? A. A में क्या है? Hinge joint between humerus and pectoral girdle. Hinge है क्या? Humerus. ये ball and socket है. Ball of humerus,
सॉकेट ऑफ पेक्टोरल गिर्डल, ऐसे घूम रहा है. सो दैट इज नॉट हिंजर. हिंज किधर है? नी के आपके वहां पे आते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स यहाँ पे. एंड यहाँ पे कौन सा है? कार्पल्स एंड द थंब के बीच में स्पेशल वर्ड है, सैडल जॉइंट, राइट. तो ये gliding joint is the correct answer. It is between the carpals. Yes. Which one of the following is the correct description of a certain part of a normal human skeleton? सोचो. फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस. इज इट ट्रू? आज की क्लास में 3 बार मैं बोल चुका है फर्स्ट वर्टिब्रे का नाम. Was that axis? No. Then what was that? Atlas. Axis सेकंड वर्टिब्रे होता है, फर्स्ट नहीं. तो ये गलत है. The 9th and 10th pairs of ribs are called the floating ribs. 8, 9, 10th of false rib है. 10, 11 and 12th है floating ribs. This is also wrong क्योंकि यहाँ पे 11, 12 आना चाहिए. Glenoid cavity is a depression to which the thigh bone articulate. वो acetabulum था ना. Glenoid cavity is present in the humerus region, right? Am I correct? Sure. acetabulum में फीमर और ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा था. Then let's check the last one. सही है क्या? Parietal bone and the temporal bone of the skull are joined by fibrous. Oh, वो तो सही है. So which means that glenoid cavity is not the depression into which thigh bone attach. It is acetabulum. याद रखो acetabulum. Note down करो acetabulum ह्यूमरस में, ग्लिनोइड कैविटी फीमर अटैच करने के लिए. देखो ग्लिनोइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच ह्यूमरस आर्टिकुलेट, थाई बोन नहीं है. A cricket player is fast chasing a ball in the field. Which one of the following groups of bones are directly contributing in this movement? Okay, good question, right? एम्स का क्वेश्चन था 2006 में. क्रिकेट प्लेयर फास्टली चेसिंग ए बॉल. ओके, तो कौन सा ग्रुप ऑफ बोन्स उसमें इन्वॉल्व है? मतलब रनिंग है, चेसिंग है, बॉल है, तो क्या क्या आ सकते हैं? सोचो. पेल्विस, अल्ना, डी टार्सल्स, लीमर, मेटाटार्सल्स, टिबिया. डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग, राइट? फीमर मालियस. कुछ ऑप्शन हम एमिट कर रहे हैं, मतलब अवॉइड करते हैं. मालियस आया मतलब इट्स नॉट करेक्ट आंसर. मालियस इज इन द ईयर. यहाँ पे दिस क्वेश्चन, यहाँ ये पूरा क्या है हमारा? लिम्ब बोन्स है. पेल्विस, हिप, अल्ना, इट्स द one of the bones in lower leg. Patella, kneecap, tarsals. Tarsals are found in the ankles. Okay. और वो डाउट में रखेंगे हम. स्टर्नम, फीमर, टिबिया, फिबुला. स्टर्नम आया. स्टर्नम इज चेस्ट बोन, हटाने. देन यहाँ पे
टार्सल्स, फीमर, मेटाटार्सल्स, टिबिया। इसमें फीमर को भी हमने इंक्लूड किया है, थाई बोन को भी। सो फास्टली रन करना है तो which all bonds are essential? Let's check the answer first. See, D. फीमर भी इंक्लूड करना चाहिए, फीमर के बिना अल्ना है उसमें बट स्टिल फीमर इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग। तो फीमर, देन टिबिया, फिबुला में टिबिया को इंपॉर्टेंस है, टिबिया, देन टार्सल्स, ऑफ कोर्स टार्सल्स, देन मेटाटार्सल्स मींस सोल के पैरेलली जो बॉन्ड्स चलता है वो फीट में। ये सब कुछ चाहिए फर्स्ट रनर्स के लिए। सो यू कैन राइट दिस, tarsals, femur, metatarsals and tibia are directly contributing while chasing a ball. Okay, next question. Strongest muscle in the human body. As science students, these are general knowledge one should have. देखते हैं, बाइसेप्स है, बाइसेप्स पता है ना किधर है, फोर आर्म्स में आते हैं। देन ग्लूटियस मैक्सिमस है, ग्लूटियस मैक्सिमस थाइस में आते हैं। देन स्टेपिडियस, masseter, masseter is the muscle present over here. ऐसे दो जो के बीच में, च्यूइंग के लिए जो मसल लगता है ना, च्यूइंग के लिए वो वाला। सो एक्चुअली दिस इज द आंसर, masseter. So masseter muscles are the strongest muscle in the human body. Stapedius is the smallest skeletal muscle in the human body. Gluteus maximus is the largest muscle in the human body. तो कौन कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल? नोट डाउन करो, masseter, it is the chewing muscle. Stapedius is the smallest skeletal muscle. Gluteus maximus is the largest skeletal muscle. If you want, you can note the location. Stapedius muscle, उसका location middle ear में होता है, ear की muscles है. Stapes is a bone in middle ear. Stapedius is related adjacent to that. What about gluteus maximus? ये buttocks की muscle है. This is the largest muscle. तो smallest muscle भी हो गया, लार्जेस्ट मसल भी हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी हो गया.
याद करो, स्टेपीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड मस्टिटस। Okay, another question. Skeletal muscles are controlled by which nervous system? Sympathetic, parasympathetic, somatic, sympathetic and parasympathetic, both. If you just consider some emergency situation may pupil dilate, peristalsis stops, cardiac muscle started beating, ये सब muscles, pupil, iris की muscle, is it skeletal? No, smooth muscle है. So sympathetic and parasympathetic system is affecting smooth muscle. And what about heartbeat बढ़ता है ना, अगर emergency situations आया तो कार्डियक मसल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक को. सो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि इनवॉलंटरी मसल से रिलेटेड है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक किससे रिलेटेड है? इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहा है. इनवॉलंटरी मसल्स आर टू, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल. मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. आंसर फिर क्या रहेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस. अब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है एक बार देखते हैं. सी है ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज द आंसर. यस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम. इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मतलब हमारा पीएनएस जो होता है, पीएनएस की एक पार्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? कंट्रोल स्केलेटल मसल, कंट्रोल स्केलेटल मसल. गॉट इट? तो जस्ट नोट डाउन, पीएनएस की एक ब्रांच ड्रॉ करो, उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेंशन करो, एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम के नीचे एक आरो मार्क डाल के यू कैन राइट इट कंट्रोल स्केलेटल मसल. एक और क्वेश्चन देख लो. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. चलो, इट्स एन एक्टिविटी फॉर यू टू, अपने आप फाइंड आउट करो. मिला आंसर्स? चलो, लेट्स रीड. Bones support and protect softer tissues and organs. Bones support and protect, हाँ बराबर बोल रहे हैं. Yes, it protects softer tissues. Weight bearing function is served by limb bones. Of course, पूरा बॉडी का weight limb bones bear कर रहे हैं. Ligament is the site of production of blood cells. वो गलत है. किधर है फिर ब्लड सेल्स? ब्लड सेल्स का बोन मारो, बोन की कोर पार्ट से आते हैं.
बोन मैरो से आता है ब्लड सेल्स. सो दिस इज रॉन्ग. दिस टू आर करेक्ट. adipose tissue is specialized tissue to store fat. वो भी तो सही है. A B D. हो गया A. Tendons attach one bone to another. नहीं, tendon muscle to bone है, ligament है bone to bone. So the only answer is A B D. ये तीनों सही है. Yes. Moving to another question. Bone have a hard and oh, ये आंसर ही बता रहा है. आंसर इज ये. Yes, that's we already checked. Now, choose the correct statement about a muscular tissue. Select करके बोलो. Read it. आंसर डी. देखिए, skeletal muscle fibers are uninucleated and found in parallel bundles. Uninucleated कैसे हो गया? It's multinucleated, right? Then intercalated discs allow the cardiac muscle cells to contract as a unit. Intercalated discs are there in the cardiac muscle, that I agree. But your answer is D, right? Smooth muscles are multinucleated and involuntary. This is wrong. Intercalated discs allow the cardiac muscle to move. Intercalated disc किधर है? क्लास में भी ड्रॉ किया था ना. देखिए, cardiac muscle appear like this, branched है. Striations दिख रहा है. ये हर एक पार्ट को उसको intercalated disc बोल सकते हैं. So there are different intercalated discs in a single cardiac muscle. So intercalated discs allow the cardiac muscle to contract as a unit. C. The walls of blood vessels are made up of columnar epithelium. Walls of blood vessels are made up of areolar tissue, not columnar epithelium. The connective tissue covering the blood vessels है तो areolar है. अगर blood vessel किस चीज से बनाया है? So देखो, alveoli और blood vessel की डायग्राम ड्रॉ करते टाइम में हमने क्या ड्रॉ किया है? alveoli को squamous epithelium ड्रॉ किया और एंडोथेलियम ड्रॉ किया है ब्लड वेसल्स को, है ना. सो इट इज नॉट कॉलमनार एपिथेलियम. वी कैन चेक द आंसर. इट्स बी. बी क्या था? इंटरकलेटेड डिस्क कम्युनिकेशन जंक्शन एट सम फ्यूजन पॉइंट्स. दो दो डायग्राम्स के बीच में, दो दो सेगमेंट्स के बीच में जो इंटरकनेक्टिंग जगह रहता है उसको बोलता है इंटरकलेटेड डिस्क. ये डिस्क मदद करते हैं क्या करने के लिए? यो ऐसे सिंगल यूनिट कार्डियक मसल को ऐसे पंप करने के लिए, कंट्रैक्ट करने के लिए. यस. A narrow dark line seen in isotropic band. I band means actin से बनाया हुआ band of myofibril. I band की बीच में जो narrow line होता है उसका नाम क्या है? सोचो, think. अगर A band होते तो M line होता है बीच में. Is that line is at the midpoint of I band? Let's check. ये CET में पूछा था. Z line ना, वही है ना हमारा आंसर. Z line. वेरी गुड, जल्दी बोला. So this was asked in 2020 MST CET. Okay. During muscular contraction, which of the following events occur? This is also very important. पर वो भी देख लो. आंसर करने का कोशिश करो.
मिला आंसर? देखिए एच जोन डिसअपियर्स, एक बार ना वो डायग्राम में ड्रॉ करता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अनन्या में अभी किसको ड्रॉ कर रहे होंगे? इजेड लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन है इजेड लाइन, इजेड लाइन वर्टिकल लाइन है ना? हाँ नहीं, कुछ भी लाइन नहीं है, आई एम ड्रॉइंग द आई बैंड इज मेड अप ऑफ एक्टिन। एक्टिन के बीच में कौन आते हैं? ए बैंड मायोसिन आते हैं। ओके अभी देखो this zigzag line is called Z line. This zigzag line is called Z line. Okay. दो Z line के बीच में आ गया sarcomere. What is this? Sarcomere. देखो यहाँ पे कंट्रैक्ट करते टाइम में एच जोन किधर है? एच जोन मतलब ये देखो एम लाइन के वो वाला जगह जहां पे ओनली मायोसिन प्रोटीन इज फाउंड, दैट इज कॉल्ड एच जोन। ओनली मायोसिन ही है, एक्टिन वहां पे ओवरलैप करने के लिए नहीं आया है, सो ये सेंट्रल पोर्शन को हमें एच जोन बोल सकते हैं। अभी देखो एच जोन डिसअपियर, अच्छे से कंट्रैक्शन हो गया तो एक्टिन कैन ओवरलैप कंप्लीटली विद मायोसिन, तो ये एक्टिन पूरा ऐसे 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 आ जाएगा, एक्टिन आया तो फिर एच जोन डिसअपियर होता है, सो एच जोन डिसअपियर्स, दैट इज ट्रू। ए बैंड वाइडन्स, ए बैंड क्या है? ए बैंड इज दैट मायोसिन का बैंड है, दिस रेड लाइन इन द मिडिल इज द ए बैंड। ए बैंड वाइडन होता है क्या? ए बैंड के पास खींच रहा है, सो वी कांट से ए बैंड वाइडन्स, ए बैंड को यूनिफॉर्म स्टेट में ही है वो। आई बैंड reduces in width, आई बैंड पास में आया है, दैट कैन बी करेक्ट राइट, सो ए सी। नाउ डी, मायोसिन हाइड्रोलाइसिस एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई। ऑफ कोर्स मायोसिन के पास एडीपी बाइंडिंग हेड रहता है ना, मायोसिन के हेड रीजन में उससे दो हेड है ना, उसमें एक जगह पे एक्टिन बाइंडिंग साइट भी रहता है, दूसरे जगह पे एटीपी बाइंडिंग साइट भी रहता है, सो एटीपी बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट, या दैट वी एग्री, डी इज ट्रू। E, Z lines attached to actins are pulled inwards, Z lines are pulled inwards, E सही है, D सही है, H on disappear, तो A D E C राइट, तो कौन सा ऑप्शन है? B E B, देखते हैं, यस B इज द करेक्ट आंसर। तो B में क्या बोला है? H जोन डिसअपियर हो गया, आई बैंड जो एक्टिन से बनाया हुआ आई बैंड है, आई बैंड शॉर्टन हो गया, देन इजेड लाइन पास में आ गया, वन मोर वाज देयर राइट, व्हाट वाज दैट? मायोसिन में एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया, यस। चलो, क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन आर ब्रोकन बाय, कैसे? इट्स अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, तुम लोग लिखो, वो एम्स 2018 पूछा था। बताएं आंसर क्या है? पकड़ने के लिए एटीपी हाइड्रोलिसिस होना है, रिलीज करने के लिए नया एटीपी आके बाइंड करना है, सो एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर टू टाइम्स। ओके, फर्स्ट एक जो एटीपी आके बैठा है वो हाइड्रोलाइज होगा, वो हाइड्रोलाइज हुआ तो क्या होता है? एक्टिन को जाके पकड़ सकते हैं, मायोसिन को क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, क्लियर क्लियर। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन के टाइम में हटाने के लिए क्या करना है? हटाने के लिए क्या करना है? दूसरा एटीपी आके, फ्रेश एटीपी आके बाइंड करना पड़ेगा, सो बाइंडिंग ऑफ एटीपी ऑफ द मायोसिन हेड। तो ऐसे तुम लोग नोट डाउन करके रखो,
हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी किया तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, बाइंडिंग ऑफ ए न्यू एटीपी किया तो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज. देखो बाइंडिंग ऑफ न्यू एटीपी टू द मायोसिन. आगे देखो अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम? कार्टिलेज, नो डाउट. वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कार्टिलेज ही रहता है. वो देखो कब पूछा है, किधर पूछा है, नीट 2022. ऐसे इसी इसी क्वेश्चंस भी पूछता है. So cartilage forming the intervertebral disc is present in between the adjacent bones of the vertebral column. And यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उससे उसको कुछ रिलेशन नहीं है. ये साइनोवियल जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट अलग है. डोंट रेफर टू दिस डायग्राम हियर. दिस इज नॉट अ कार्टिलेजिनस जॉइंट. दैट यू नो वर्टेब्रे के बीच में कार्टिलेज है. दिस इज साइनोवियल जॉइंट. फिर क्या, अरियोला टिश्यू किधर थे? ब्लड वेसल्स के ऊपर रैप करते हैं. इंटरकलेटेड डिस्क कार्डियक मसल में होता है. स्मूथ मसल्स विसरल ऑर्गन्स के पास है. सो द ओनली रेस्पेक्ट करेक्ट आंसर इज व्हाट? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द वर्टेब्रे. वी मस्ट द फॉलोइंग करो एक बार. तीसरी मिला. पहले का दो पता है तो फिर तीसरी हो जाएगा. स्कैप्यूला. स्कैप्यूला इज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन. क्रेनियम में के बीच में फाइब्रस जॉइंट. वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट. स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन. तो आंसर विल बी A4, B3, A. नीट 2021. तो अभी इसी हो रहा है ना ये चैप्टर की सारा प्रॉब्लम्स हम सोल्व कर पा रहा है. A is the answer. Yes. Now, which of the following is a correct match for disease and its symptoms? देखो, muscular dystrophy, an autoimmune disorder causing progressive degeneration of skeletal muscle. हाँ, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है क्या? पूछो, मैं पूछ रहा हूं, बोलो. मस्कुलर डिस्ट्रोफी
हम दो ही डिसऑर्डर पढ़ने को है मसल से रिलेटेड, एक है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक है माइस्थीनिया ग्राविस। बी आर्थराइटिस, इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, आज ही पढ़ाया, यस ये सही है, विच मीन्स दैट ए मस्कुलर डिस्ट्रोफी वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, मसल्स डीजनरेट होता है। एंड ए माइस्थीनिया ग्राविस है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जहाँ पे मसल की वर्सेटाइल कोलिन रिसेप्टर डैमेज हो रहा है। तो मतलब ये दोनों ऐसे डिसऑर्डर करके दिया था। यहाँ पे अगर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो सही है, यहाँ पे अगर माइस्थीनिया ग्राविस आए तो भी सही है। तो ग्राविस, माइस्थीनिया ग्राविस में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो रहा है, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसमें मसल्स क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है। टेटनी, हाई कैल्शियम 2+ लेवल्स कोसिंग rapid spasm. Tetany, we referred to tetany, right? Minute. स्लाइड नंबर कौन सा था? 89। एक बार हम डिसऑर्डर्स फिर से रिवाइज करके आएंगे। सी टेटनी क्या है? लो कैल्शियम लेवल है, हाई कैल्शियम लेवल नहीं। लो कैल्शियम की वजह से विगरस कंट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज टेटनी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेस्ट चेक। तो याद रखो टेटनी वहां पे गलत दिया था, हाई कैल्शियम लेवल्स। ओके, माइस्थीनिया ग्राविस देखो वो किधर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है माइस्थीनिया ग्राविस, जहां पे हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड। देन मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। यस, which of the following is the correct match? Arthritis, inflamed joints, that is the correct answer. देखो, arthritis, inflammation of the joint, very good. Next question, which of the following hormones, though synthesized elsewhere, is stored and released by the master gland? Which is the master gland in our body? पिट्यूटरी, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड से रिलीज करने वाला दो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस बना के रिलीज करते हैं, हाइपोथैलेमस में बनाते हैं, इट्स लाइक दिस। ओके, जस्ट अ सेकंड। यही था ना क्वेश्चन? देख, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, वो पूरा रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रहा है। फॉर एग्जांपल, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड, नहीं टीएसएच नहीं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच। ओके, वैसे जो हार्मोन्स रहता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, वो सब एंटीरियर पोर्शन में जाएगा। देन रिलीजिंग हार्मोन्स मिलने के बाद स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या ट्रोपिक हार्मोन्स बनाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी।
फॉर एग्जाम्पल थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया तो थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना सकते हैं किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या काम है? हाइपोथैलेमस ऐसा दो हार्मोन्स बनाते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे सकते हैं, वो है ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन को एडीएच बोल सकते हैं। ओके, सो एडीएच यानी वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन आर द टू हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस and but stored and released from the posterior pituitary। क्रेडिट किसको दे रहा है? पिट्यूटरी को, बट बनाया कौन? हाइपोथैलेमस। तो ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच है, ऑप्शन में एडीएच आंसर है, समझा? बाकी सब एंटीरियर से आ रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बी इज द आंसर। बी इज द आंसर, एंटी डायरेटिक हार्मोन या ऑक्सीटोसिन भी आते हैं उससे, दो आंसर्स आते हैं। Acidic pH muscles is due to what? ये देखो 2019 एम्स का क्वेश्चन है। मसल्स में acidic pH क्यों आते हैं? रीजन क्या रहेगा? एक गसवर करके देख लो। I can give a clue। मसल पेन और मसल स्पासम, क्रैम्प कब होता है? यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन? नहीं, वो आर्थराइटिस मतलब जॉइंट पेन, गाउट। मसल का पूछ रहा हूं, मसल में कब होता है? ग्लाइकोलिसिस, यू नो ग्लूकोज। ये देखो ग्लूकोज की पाथवे पता है ना। अभी नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट सेशन में हम ये चैप्टर लेने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो उसमें मैं सिखाऊंगा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोविक एसिड इन द साइटोप्लाज्म। सब में ये होता है, बट पायरोविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द मसल। ये किधर होता है? मसल में होता है। एंड द सेम थिंग कैन हैपन इन द आरबीसी आल्सो। सो मसल और आरबीसी में पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को बोलता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ज्यादा देर मसल काम कर रहा है तो लैक्टिक एसिड बिल्डअप होगा, इसकी वजह से पेन होता है, क्रैम्प्स होता है, बराबर। सो आंसर विल बी लैक्टिक एसिड। चलो ये रीड करो। Okay, moving to another question. We are almost approaching the end of this PPT. Few questions are remaining. देखो, which of the following muscular disorders is inherited? ऑटोइम्यून है माइस्थेनिया ग्राविस, वो इनहेरिट नहीं होता। ऑटोइम्यून का मतलब क्या है? वो दैट इंडिविजुअल में ही होता है, वो ट्रांसमिट नहीं होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बट जेनेटिक डिसऑर्डर है कौन? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वो ट्रांसमिट होता है। तो आंसर क्या रहेगा? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नोट डाउन किया? मस्कुलर डिस्ट्रोफी नोट डाउन करो। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जेनेटिक डिसऑर्डर, माइस्थेनिया ग्राविस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर।
और टेटनी क्यों होता है? लो लेवल ऑफ कैल्शियम मसल स्ट्रेन होता है। बोटुलिज्म क्या है? इट्स अ डेंजरस टाइप ऑफ फूड पॉइजन। बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म नामक एक बैक्टीरिया अगर फूड पॉइजन की वजह से अंदर गया तो डेडली डिसीज होता है बोटुलिज्म। सो दिस इज द आंसर। व्हिच वन? मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज जेनेटिकली इनहेरिटेड। ये मैच द फॉलोइंग करो भी। सी, देखो जल्दी बोला, वी नीड ओनली 10 सेकंड्स टू आंसर, राइट? इतना एक्सपर्ट हो गया हम। गाउट, गाउट क्यों होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से। यस। टेटनी क्यों होता है? लो कैल्शियम लेवल। यस। देन मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्यों होता है? अभी तो बोला जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मींस यहाँ पे तो A3 B1 C2 D5 C, राइट? देखो नीट 2020, वेरी गुड, क्विकली आंसर किया हुआ। C is the answer, of course. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as what? Spasm. Spasm नहीं spasm है लेके spasm। हाँ, मतलब दो स्टिमुलस आ गया, उसके बीच में कंट्रैक्ट करके रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला तो विगरस कंट्रैक्शन होता है। विगरस कंट्रैक्शन की वजह से पेनफुल मसल क्रैम्प्स होता है, उसको हम स्पासम्स बोलते हैं ना। लेट्स चेक। टेटनस, lack of relaxation between successive stimuli, टेटनस। यस, टेटनी अभी तो हमने पढ़ा। टेटनी, टेटनी लो कैल्शियम लेवल की वजह से विगरस कंट्रैक्शन होता है। यस, दैट इज मोर सिवियर देन स्पासम। स्पासम इज नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम। Spasm only happens for a few moments because of the accumulation of lactic acid or something. But two कंट्रैक्शन के बीच में रिलैक्सेशन नहीं हुआ तो मतलब कैल्शियम नहीं आ रहा है, तब कैल्शियम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, लो कैल्शियम लेवल, सो दैट कॉजेस टेटनी। टेटनी इज द आंसर। ओके, सो द आंसर सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन रेस्पॉन्ड टू सक्सेसिव स्टिमुलाई इज टेटनस एंड स्पासम क्या है? सडन इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन। वो थोड़ी देर के लिए होगा, क्विक रहेगा, ये टाइम में धीरे धीरे डेवलप कर रहा है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ये पेन, टेटनस। तो स्पासम इज ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो भी कंट्रैक्शन है, शी इज एक्चुअली राइट, बट लॉन्गर पीरियड का पूछा है यहाँ पे, दैट इज टेटनी। तो ये नोट करो द डिफरेंस बिटवीन टेटनस एंड स्पासम। फटीग क्या है? मसल की एक्टिविटी डिक्लाइन हो रहा है। मसल को अभी देखो बहुत देर वर्कआउट किया तो फिर कुछ भी उठाने का वो ताकत नहीं रहता है, ऐसा वाला सिचुएशन, दैट इज नोन एज फटीग। बार बार लिख के 3 आवर पेपर लिख के हाथ थक जाते हैं ना, उसको फटीग बोलते हैं। So we came to the end of the slide. क्या कुछ तो इस चैप्टर में हम मेनली किसको फोकस करना है?
मसल कंट्रैक्शन में फोकस करना है। मसल कंट्रैक्शन की जो थियरी है, व्हाट इज इट? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी किसने डिस्कवर किया? हक्सली। सो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपल्स आने के लिए impulses will come from the brain. कैसे आता है फाल्गुनी impulses? Impulses from the brain कैसे reach? How will they reach the muscle? Neurons लेके आता है ना? And there is a junction between the muscle and neuron, उसको क्या बोलता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NM जंक्शन में आ जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आ गया तो T ट्यूब्यूल्स, दे आर मसल्स की ट्यूब्यूल्स है, वहां पे कैल्शियम आयोन्स की एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। पहले एक्शन पोटेंशियल डेवलप्स इन द मसल्स, एक्शन पोटेंशियल डेवलप्स इन मसल। एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया तो कैल्शियम की डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है। कहां से निकलता है कैल्शियम? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो SR लिख रहा हूं मैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस Ca2 प्लस ions to the into the कहां पे? सार्कोमियर पूरा भर गया है अभी कैल्शियम 2 प्लस ions। एंड वी ऑलरेडी नो एक्टिन कैसे दिखता है? जी एक्टिन से बनाया हुआ ग्लोबुलर एक्टिन रहता है ना, एक फिलामेंट को हम एफ एक्टिन बोलता है। ऐसे कितना? 2 filaments are there, right? एंड उसको कवर करते हुए क्या है? ट्रोपोमायोसिन इज रनिंग। ये रेड कलर में जो ड्रॉ किया दैट इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के अलग अलग जगह पे व्हाट यू कैन सी? ट्रोपोनिन। आर यू एबल टू सी दैट पर्पल कलर? शेड करता हूं, ये देखो, this is troponin. What is this? Troponin. ये ट्रोपोनिन के ऊपर अगर कैल्शियम आके बैठा, if calcium comes and attached on the troponin, then the entire tropomyosin shift from there. उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग हियर calcium binds to troponin so that tropomyosin changes its conformation. अगर ऐसे कन्फर्मेशन में बदलाव आ गया तो फिर क्या होगा? एक्टिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट विजिबल होगा एक्टिन में। सो मायोसिन बाइंडिंग साइट बिकम एक्सपोज्ड। वो एक्सपोज होने के बाद क्या होता है? एक्टिन सीधे जाके एक्टिन में मायोसिन आके बाइंड करते हैं। सो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ऑकर्स। ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म करने के लिए एटीपी हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो यहां पे एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है। एंड वंस एक बार क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया, देन इट पुल्स अपार्ट। किसको कौन पुल करते हैं? मायोसिन एक्टिन को पकड़ा ना, तो मायोसिन विल पुल दी एक्टिन सो दैट सार्कोमियर शॉर्टन हो जाएगा। देन रिलैक्सेशन स्टेट में पूरा रिवर्स ऑकर होता है। क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने के लिए नया एटीपी आके बाइंड करना है, कैल्शियम हट जाएंगे ट्रोपोनिन से सो दैट वापस ये कॉन्फ़िगरेशन में आ गया होगा। देन कैल्शियम विल गो बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, so everything will become in the relaxed stage. So this
स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये फिर से मैंने रिवाइज किया। सो होप यू अंडरस्टूड। ये 2 लेक्चर्स में पूरा वो चैप्टर अच्छे से हमने कवर किया। इवन यू आर नाउ कॉन्फिडेंट टू आंसर द एवरी क्वेश्चन क्विकली दैट आई नोटेड। ओके, तो और प्रैक्टिस करो। अभी आने वाले नीट सीईटी जैसे एग्जाम में इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, वो सब यू विल बी एबल टू आंसर इजीली एंड एफर्टलेसली। थैंक यू।